देखो रजत, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद प्राइस लेवल अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग में नाम तो क्लियर हो रहा है कि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अकाउंट डू अकाउंटिंग डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस लेवल्स मींस इन्फ्लेशन। यू कैन लिंक इट विद द इन्फ्लेशन वर्क, यस और नो? सो इन्फ्लेशन वाली चीज़ां इनकम टैक्स 'ਚ भी कीतियां तुसी, इन विच लेसन? कैपिटल गेन्स है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यस और नो? तो उत्थे भी तुसी की करदे दोस्तों? पहली चीज बेस उतो पिक करो अपना। नॉर्मली की सोचते? सेलिंग प्राइस, यस और नो? So normally we use the sale price. Okay, we take a certain value. Then we deduct the cost depending upon the indexing. Yes or no? CII of current period divided by CII of the previous period, or we can say purchase period जब खरीदे ऐसे. Yes or no? इतने करते indexing as per the time value. Agree? ठीक है? And the balance is your profit or loss. उसे आंदा ना कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस. एग्री? सिमिलर कंसेप्ट थे यूज होया पहली चीज ऑनलाइन, यस और नो? जो भी इतने वैल्यू आऊगी बच्चा, ठीक है? आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग, सब तो पहली चीज इलस्ट्रेशन 4 देखो इसी क्वेश्चन में. कहते a company has the following transactions at the given dates and imaginary price indices for the first quarter of 2020-21. ਤੁਹਾਨੂੰ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज देते, जो भी मतलब ट्रांजैक्शंस देती है. फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, एसेट लायबिलिटी नहीं, ट्रांजैक्शंस देते हैं. और प्राइस इंडेक्सेस भी देते हैं, which is called indices, yes or no? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना? 8,000. You were having a cash of rupees 8,000. Cash sales will increase cash or will reduce cash? Cash sales will increase cash. Next चीज है डाटा पढ़ो और लिखा पेमेंट टू क्रेडिटर्स will reduce cash. Cash purchases reduce cash. Payment of expense reduce cash, and the balance will be closing cash. Yes or no? Means it's like a cash budget which we have studied in cost accounting. कि opening cash and the receipts add करो and after that deduct the payments, you'll get the closing cash. Yes or no? तो पहली चीज अगर स्टेटमेंट ऑफ कैश की गल करिए, कन्वेंशनल अकाउंटिंग कन्वेंशनली अगर तुसी प्राइस लेवल्स और इन्फ्लेशन के पॉइंट्स ਨੂੰ नहीं सोचते तो is this format okay? You were having opening balance of cash, add the receipts, that is cash sales, total cash आ गया a point, then less all the payments, cash payments, that is creditors, payment for purchases and payment for expenses. So 1a minus b करके किया गया closing balance of cash. Any doubt in this first column? बिल्कुल easy. Now you are also given the price indices. Yes or no? उन प्राइस इंडेक्स किस चीज ਦੇ गिवन है? उस सर्टेन डेट ਦੇ 1 अप्रैल ਦੇ 1 ਮਈ ਦੇ 1 ਜੂਨ ਦੇ. बट ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਤੇ. अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन हर चीज का एनालिसिस किस दिन कर रहे हो? क्लोजिंग डेट पे. तो यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द क्लोजिंग डेट. क्लोजिंग डेट पे इंडेक्स ना मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड? कैपिटल गेन्स की कर दे आज ਦੇ कैपिटल इंडेक्स ਦੇ ਨਾਲ CII ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ और प्रीवियस वाले परचेज वाले ਨਾਲ डिवाइड करो. और ਸਾਡਾ प्रोपोर्शन बॉक्स मैजिक बॉक्स भी ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ मल्टीप्लाई जिथे है डिवाइड. मींस अगर ਤੁਸੀਂ ओपनिंग बैलेंस ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? क्लोजिंग डेट पे. So you will multiply with 110 and divide by 100. कि वही लिखे conversion factor. For the second thing 110 divided by 104. For the third thing 110 upon 106. Then divide by 108 divide by 110. Agree? कोई डाउट इस चीज कन्वर्जन फैक्टर कॉलम? नो. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਦਿਸ ਕਰ. एग्री? You got these values? Yes or no? As per the converted values. मिल गया? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ a ਮਾਈਨਸ b ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 825 825. नॉर्मली अगर ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ. ਯੈਸ অর नो? सो एज पर द कन्वेंशनल अकाउंटिंग योर क्लोजिंग कैश इज 7,000. बट अगर ਤੁਸੀਂ ਰਿਤਿਕਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ और प्राइस लेवल्स ਦਾ इफेक्ट सोचो. योर क्लोजिंग कैश देखो ਤੁਹਾਡੇ एसेट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
कैश ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਰ receipts ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕਰਤੀ ਐਸ ਪਰ ਦ ਡੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਡੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਕੋਈ 1 ਮਈ, ਕੋਈ 1 ਜੂਨ, ਕੋਈ 30 ਜੂਨ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਲੈਸ, ਬਟ ਅਗਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਤੇ ਲਿਆਓ on the closing date, analysis ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ your cash closing balance should be 8 to 5। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡਿਸਕਸ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟ 10 ਲੱਖ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਔਨ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਡੇਟ ਐਂਡ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਔਨ ਦਾ ਮਿਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਲੈਸ ਥੋੜੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡਲੈਸ ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਡਲੈਸ ਸੇਮ ਸਿੰਪਲੀ, no effect is put on that about the time। so but ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਤੇ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਐਡਲੈਸ ਕੀਤਾ then your cash should be 8 to 5 but you are having 7,000, so it's a profit or a loss। ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ 8 to 5 ਬਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7,000, so there's a monetary loss of 1 to 5। agree yes or no? Because ਸਾਰੇ transactions ਦੀ cash ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ dates ਦੀ ਸੀਗੀ, but still conventional accounting ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ as it is, yes or no? but ਅਗਰ price level accounting ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ cash simple last date ਤੇ cover ਹੋ ਗਈ, yes or no? then ਅਗਰ ਇਹਦੀ accounting ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ expected balance should be 8 to 5 but you are having 7,000, so there is a loss of 1 to 5। any doubt, any doubt, clear? Online any doubt बच्चा? No। okay, next देखो अपनी exercise the second question check करो, same है question। company the transactions given है, opening balance 6,000, cash sales given, payment to creditors, cash purchases, payment of expenses and closing balance। मतलब एक्चुअली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਅਕਾउंटिंग ਦਾ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਫੁਲੀ ਫਰੇਮਡ ਹੈ, बट यहाँ पे सिंपली एडलेस यू विल शो, यू विल शो द टोटल ऑफ ए देन टोटल ऑफ बी, है ना? आ दो चीजें ऐड करके यू विल से टोटल ए एंड आ वाली चीजें ऐड करके यू विल से टोटल बी देन ए माइनस बी, तो यू विल शो क्लोजिंग बैलेंस, यस और? but after that you'll put a column of conversion factor, that is 110 into this, 110 into this, 110 into this, मतलब upon करके into 110 करके डिवाइड अपने वाले ईयर ਦੇ ਨਾਲ, यस और? कन्वर्जन फैक्टर लगा के कन्वर्टेड वैल्यूज मिलके थोड़े को क्लोजिंग बैलेंस जो एक्सपेक्टेड है एज पर द प्राइस लेवल अकाउंटिंग मिल जाऊगा, बट है कि ना थोड़े को 7,500 एंड यू विल गेट अगेन मॉनेटरी लॉस ऑफ 1,174 रुपीज, यस और? कोई डाउट? जेडे बच्चे ने हम कैपिटल गेन किया उन्होंने इस कंसेप्ट को वैसे नहीं दिक्कत आ, बिल्कुल बेसिक है रिलेटेड टू दैट, उन्होंने ਆਪਾਂ बेस लेके स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन भी देखो, कहते मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीन इन 2001 for rupees 1 lakh when the general price index was 100, he sold this machine in 2020-21 for 1,65,000 when the general price index was 301। calculate the profit or loss on the sale of machine keeping aside the price level changes। तो की करोगे? बिल्कुल कैपिटल गेन्स याद आ रहे हैं, सेल प्राइस ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? सेल प्राइस कितना है ਤੁਹਾਡਾ 1,65,000, दैट्स ओके। परचेज प्राइस कितना 1 लाख, बट वो ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 100 ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, so you will bring it to 301, so multiply by 301 and divide by 100, so ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ है ना? 3,01,000 ਆ ਰਿਹਾ ਕॉस्ट, ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 1,65,000 means there is a loss of 1,36,000 everyone, yes or no? agree? so exercise 1 भी easily cover हो जाओगे। बोलो क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर बचा?
Next, next topic is COSA and MWCA. COSA is cost of sales adjustment. Cost of sales adjustment, COSA. And NWCA is WC क्यों होता है? Working capital. M is monetary working capital adjustment. ठीक है, याद आ गया ना थोड़ा? So COSA is cost of sales adjustment and NWCA is monetary working capital adjustment. Formula दोनों लिए similar है. That is closing value minus opening value. पहला क्या है? Closing minus opening, bracket close, minus index किधर? IA लिखा है ना? That is average index. IA मतलब average index. Into then क्या है नाम? C upon IC. C मतलब closing value. IC मतलब index of the closing date. Minus O means opening value upon index of the opening date. Yes or no? Formula बोलो. Closing minus opening into index of average. Average index you can say. Sorry, minus. Closing minus opening minus average index into closing upon closing the index minus opening upon opening the index. ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ COSA ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, MWCA ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ. ਇਹਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ. ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ. ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ. ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ. The information given below relates to the monetary accounts of Jayanath Company Limited. Compute the general price level gain or loss. ਤੁਹਾਨੂੰ opening data given है, closing data given है. ਕਿਹੜੀ चीज given है? Monetary assets, monetary liabilities. Opening also, closing also. Then retail price index 200, closing 300 and average 240. Data. How will we use this? देखो सब तो पहली चीज ਤੁਹਾਨੂੰ assets given है, उसी की बनाना है स्टेटमेंट ऑफ एसेट. इस सुबह लिखने का टाइम दे दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ. स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स देखो पहला कॉलम कहता है अगेन कन्वेंशनल अकाउंटिंग, देन कन्वर्जन फैक्टर एंड कन्वर्टेड वैल्यू. फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस, देन क्लोजिंग के ना सी एसेट्स वो भी चेक करो. ओपनिंग वाज 80,000, क्लोजिंग वाज 1 लाख, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितने एसेट्स इंक्रीज हुए? 20,000. So it was opening value is 80,000, increase during the year is 20,000, total 1 lakh. ओपनिंग बैलेंस ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਗਾਓ. ओपनिंग बैलेंस ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ. ਸੋ 300 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 200 डिवाइड बाय 200. और जेड़ा ड्यूरिंग द ईयर है देखो इन्हें मल्टीप्लाई बाय द क्लोजिंग डिवाइड बाय द ओपनिंग. जेड़ा ड्यूरिंग द ईयर है मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग डिवाइड बाय द एवरेज, डिवाइड बाय द एवरेज. बिकॉज ये किसी एक दिन का ओपनिंग या क्लोजिंग वाले दिन का नहीं है. दिस इज फुल ईयर का डाटा, टोटल पूरे साल कितना इंक्रीज हुआ. तो इतने डिवाइड विद एवरेज. यस सर. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਨਵਰਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ. तो एसेट्स ਦੀ टोटल वैल्यू ਕੀ ਆਈ? 1,45,000. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਤਿਕਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਐਸੈਟਸ? 1 ਲੱਖ ਦੇ, ਬਟ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? 1,45,000 ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ? ਲॉस ਔਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਐਸੈਟਸ. ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 45,000 ਦਾ. नेक्स्ट सेम वे यू हैव मेड
स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज से चेक करो। ओपनिंग कितना, 1 लाख, क्लोजिंग 1 लाख, मीन्स इंक्रीज कितना, 0। ओपनिंग ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 300/200, इंक्रीज अगर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 300/240, और क्लोजिंग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਟੋਟਲ 150, 1,50,000। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? अगर प्राइस लेवल सोचो तो कितनी हो जानी लाइबिलिटी की वैल्यू 1,50,000, बट है कितनी 1 लाख। फायदा नुकसान? इतने फायदा है, दिस इज गेन ऑन होल्डिंग द लाइबिलिटी। ओवरऑल की होया थानू, एसेट्स होल्ड करन च 45,000 दा लॉस, लाइबिलिटी होल्ड करन च 50,000 दा गेन, नेट गेन होया 5,000। दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। की कितना बोलो? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ एसेट के अंदर भी फॉर्मेट किया है, कन्वेंशनल अकाउंटिंग, कन्वर्जन फैक्टर्स एंड कन्वर्टेड वैल्यूज। ਹੁਣ ਓਪਨਿੰਗ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਲੋजिंग ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ 300 ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਲਟੀ डिवाइड बाय 200। इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो यू कैन ओनली यूज एवरेज फॉर द डिवीजन, यस सर, क्योंकि सर्टेन एक डेट दे पॉइंट नहीं है टोटल पूरे साल च। पूरे साल च पहले दिन भी हो सकता, सेंटर च भी हो सकता, लास्ट भी हो सकता, किसी कितने भी हो सकता ना। सो यू हैव टू डिवाइड विद द एवरेज इंडेक्स। तो जब कन्वर्जन्स कर लिया, यू फाउंड आउट द लॉस और गेन ऑन होल्डिंग एसेट्स, लॉस और गेन ऑन होल्डिंग लायबिलिटीज, उन्होंने नेट करके ਤੁਹਾਡੇ आंसर। एग्री है सर? एक होर ਇਹਦਾ चेक करो, then you solve this। illustration 5, A Limited's monetary assets and monetary liabilities कितनी है? Monetary assets 6 lakh, liabilities 2 lakh respectively। During the period price rose by 10%, means closing index कितने तक पहुंच गया? If your prices increased by 10% और index तुसी 100 तो base पे ले रहे हो, after the year it will be 110। Opening index is 100, closing index will be 110, yes or no? They are saying compute the purchasing power gain or loss on holding the net monetary assets। So let's check illustration 5। opening index समझ आ गया 100, closing की आ गया 110, ਇੱਥੇ ਹੁਣ एक new step add हो गया। assets opening कितने given है? 6 लाख, ਉਹਨੂੰ indexing करके closing convert करता, increase कोई नहीं सी, कुछ नहीं दसिया, ਤੁਹਾਡਾ overall ਕੀ ਆਇਆ? loss on holding assets, बिकॉज है ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ assets ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 6 लाख ਦੇ, ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? 660। then liabilities ਦੀ same statement draw ਕੀਤੀ, liability है कितनी? 2 लाख, होनी कितनी सी? 220, उस फायदा हो गया 20,000, नेट की होया आज लॉस 40,000। ये सुनो 5 मिनट लगाओ इतने तक दा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नोट डाउन कर।